Hello guys, welcome back to another video. Today I shared in this video top 5 best superhero movies. First movie is Avenger Endgame. Avenger Endgame is a 2019 superhero movie. This movie based on Avengers team. It is direct sequel of Avengers Infinity War 2018. And this movie directed by Anthony and Joe Russo. And this movie main cast character is Chris Evans, Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, and Paul Rudd, Brie Larson, Benedict Wong, and Josh Brolin, and some other character in this movie. इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एवेंजर्स टीम को एंड थानोस ही इज डिस्ट्रॉय द एवेंजर्स इन इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स टीम टेक अ डिसीजन टू फाइंड थानोस एंड डिस्ट्रॉय हिम एंड स्टोन्स बट थानोस एंड डिस्ट्रॉयड देम टू प्रिवेंट एंड कैरोल डेनवर्स रेस्क्यू द टोनी स्टार्क एंड नेबुला फ्रॉम स्पेस एंड ही रीयूनाइट एंड ये कैसे थानोस को ढूंढते हैं एंड कैसे उसको खत्म करते हैं बट थानोस को जो स्टोन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर लेता है बट एवेंजर्स टीम टेक अ डिसीजन टू बैक टू पास्ट थ्रू टाइम ट्रेवल एंड ये कैसे टाइम में पीछे जाएंगे वो दिखाया गया है इस मूवी में एंड ये मूवी मुझे तो बहुत ही कमाल की लगी एज अ वीएफएक्स एंड डायलॉग एंड इमोशंस एंड दिस मूवी रिसीव्ड अ praised for its direction, acting, musical score and action sequence and emotional weight. And this movie total budget is a 400 million and this movie total box office collection is a 2.798 billion worldwide and this movie break a difference record and this movie received the award for best visual effect and this movie IMDb rating is 8.4 out of 10. Second movie is Avenger Infinity War. Avenger Infinity War is a 2018 superhero movie. This movie based on superhero team The Avengers and this movie directed by Anthony Joe Russo. And this movie story follow Thanos. He's destroyed the half of our life in the universe. इस मूवी में थानोस को दिखाया गया है जो पूरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है. पावर स्टोन्स हैव अ पावर एंड ये पहले एक एस्कॉर्ट प्लैनेट को खत्म करता है एंड थोर को एंड Thanos also kill Heimdall after he sends Hulk to Earth and Hulk Earth वापस पे आ जाता है and Hulk meet to Doctor Strange and Hulk उनको बताता है कि Thanos आ रहा है and ये Avengers फिर से एक साथ हो जाते हैं and ये Avengers कैसे Thanos से लड़ते हैं वो दिखाया गया है इस मूवी में and this movie take a huge praise for visual effect, action sequence, scene and emotional weight and this movie is the first to cross over 2 billion and this movie total budget is a 400 million and this movie total box office collection is a 2 billion worldwide and this movie highest grossing of 2018 and this movie received award for a best visual effect and इस movie ने मुझे तो बहुत ही inspire किया as a VFX and music and emotions and cinematography is next level in this movie and this movie IMDb rating is a 8.4 out of 10 and number 3 movie is Iron Man Part 3 is a 2013 superhero movie. This movie directed by Shane Black and this movie main stars is Robert Downey as Tony Stark and some other character in this movie and this movie story follow Tony Stark as Iron Man and one other terrorist name is Mandarin and एक साइंटिस्ट होती है जो donator of regenerative treatment and he's offered to Tony Stark and Tony rejected his offer and कुछ सालों के बाद वो वापस आती है and destroy the Iron Man. How will fight वो आप इस मूवी में देखेंगे and this movie received a positive reviews from critics and this movie criticized for Mandarin portrayals and this movie total budget is a 200 million and this movie total box office collection is a 1.2 billion worldwide and this movie IMDb rating is a 7.1 out of 10. Fourth movie is a Guardian of the Galaxy Part 1. Guardian of the Galaxy 2014 is a superhero movie based on superhero team and this movie directed by James Gunn and this movie main cast character is Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper and some other character in this movie and this movie story follow Peter Quill and some of group team and Peter Quill mother's death and young Peter Quill and Peter work with group of alien thieves smuggler by Yondu and this movie the story is एक planet होता है planet को एक आदमी तबाह करना चाहता है and Peter Quill and उनकी टीम कैसे उस प्लानेट को बचाते हैं वो दिखाया गया है इस मूवी में। एंड उस मूवी में आपको एक्शन, कॉमेडी
मूवी देखने को मिलेगी। एंड दिस मूवी वन ऑफ द माय फेवरेट ऑलवेज। एंड इस मूवी की म्यूजिक, वीएफएक्स एंड सिनेमेटोग्राफी एंड स्क्रीन प्ले टॉप लेवल की थी इस मूवी की। एंड दिस मूवी टोटल बजट इज 232 million and this movie total box office collection is 773 million and this movie highest grossing superhero film and this movie take a huge praise and positive reviews from audience and this film praised for its screenplay, direction, acting, soundtrack and visual effect and action sequence। and guys आपको ये मूवी कैसी लगी थी अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा इन कमेंट। एंड दिस मूवी IMDb rating is 8 out of 10। Fifth movie is Thor Ragnarok। Thor Ragnarok is a 2017 superhero movie। This movie main cast character is Chris Hemsworth as Thor and some other character in this movie। In this movie story follow Thor and his brother and his father death and save escort his home from his sister। इस मूवी में Thor को दिखाया गया है and उसकी बहन को हिला and he destroy the escort and how Thor उसको कैसे रोकता है वो दिखाया गया है इस मूवी में। एंड इस मूवी में आपको एक्शन, कॉमेडी, इमोशन देखने को मिलेगा। एंड इस मूवी की स्क्रीन प्ले, साउंड डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट एंड सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है इस मूवी की। एंड दिस मूवी टेक अ ह्यूज पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम ऑडियंस एंड दिस मूवी टोटल बजट इज 180 million and this movie total collection is 854 million worldwide and this movie IMDb rating is 7.9 out of 10। एंड guys आपकी सबसे फेवरेट सुपर हीरो मूवीज कौन सी है अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा इन कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज।